Today we start malaria. It is this name malaria is derived by male area. It is an Italian word, means bad air. Malaria continues to be a most important cause of the fever and morbidity in tropical countries, but it is eradicated from European and Western countries, America, and other countries. Historical events of the malaria. Charles Lewis first discovered the malaria in 1880s, and these are other developmental historical events. In 1955, WHO started worldwide malaria eradication program using DDT. In 1970s, mosquitoes developed resistance to DDT program and program fails. In 1976, Trigger and Jensen in vitro cultivation of parasite, malaria parasite, Plasmodium, which is cultivated in 1976. Introduction. Malaria is probably one of the oldest diseases known to be mankind that has been profound impact on our history. It is huge social, economical, health problem, particularly in the tropical countries. Malaria is a vector-borne disease transmitted by the bite of female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito, because the female Anopheles mosquito require blood meal for their egg maturation. So only female जो mosquitoes हैं, they transmit the disease. It is transmitted from person to person by the bite of female Anopheles mosquito. Malaria is caused by the Plasmodium parasite, and which is transmitted through the bite of the infected mosquito in the human body. The parasite multiply in the liver and then infect different stages of the red blood cells. Malaria is caused by the infection of one of the four single-celled Plasmodium species: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, and Plasmodium ovale. The most dangerous of the four is Plasmodium falciparum due to its complications. Falciparum accounts for 90% of the deaths due to the malaria, and vivax is the most widely spread species because it exists in both temperate and tropical climates. The malaria life cycle is to be a complex system with both sexual, which is called the sporogony, and asexual life cycle, which is called schizogony. Malaria remains the worldwide most devastating human parasitic infection. Malaria affects over 40% of the world population. WHO estimated that there are 350 to 500 million cases of the malaria worldwide, of which 270 to 400 millions are falciparum malaria, the most severe and dangerous type of disease caused by the falciparum. Malaria kills in 1 year what AIDS kills in 15 years. We know the AIDS patients are AIDS is a very dangerous disease, HIV, but it kills the people, and malaria will kill more than AIDS disease patient. 15 years killed by patients killed in 15 years by the HIV AIDS, and it is dead numbers are killed by malaria in 1 year. So there are about 50 deaths due to the malaria
per HIV case. So to aid to the problem is the increasing due to the increasing drug resistance to the established drug like chloroquine and other drugs. Four species known to infect men Plasmodium vivax, which is the disease produced by vivax, benign tertian malaria, P. oval tertian malaria, P. malaria, quatern malaria, because it takes 72 hours between the bouts of the malaria attack. Falciparum malaria, the falciparum malaria or malignant transient malaria due to the complication and death rate. Events in human start with the mosquito bite. Main is the intermediate host. Mosquito is the definitive host. Because in mosquito there is sexual life cycle completed, and in humans the intermediate host because there is asexual life cycle is complete. Sporozoites is a infective form which are present in the salivary glands of the female Anopheles mosquito. And during the bite, the saliva is transmitted into the human, and the sporozoites of the malarial parasite Plasmodium are injected into the human body. So after the bite, the infected mosquito sporozoites are introduced into the blood circulation through their saliva. Human cycle. There are four stages of the human cycle: pre-erythrocytic schizogony, erythrocytic schizogony, gametogony, and exoerythrocytic. Pre-erythrocytic cycle. Sporozoites undergo developmental phases in the liver cell. So sporozoites are elongated and spindle shaped, become rounded inside the liver parenchyma. So multiple nuclear division develop to the schizomes. In a schizome contain 20,000 to 50,000 merozoites. This is life cycle of malarial parasite, uh, which are released by the CDC. This is the malarial parasite to the blood. Mosquito bites to the human, sporozoites introduced and goes to the liver within a 30 minutes to 1 hour. Okay. The liver cells become congested with the sporozoites which are multiply to develop into the schizomes which contain 20,000 to 50,000 merozoites. RBCs are rupture, schizome release merozoites. Some of them reinfect the RBC, and again schizomes are formed, so the cycle is repeated. Other goes to the liver and not goes to the schizome form but remain dormant for years in the liver. And when there is the attacks of malaria may occur without the bout of the uh, infected mosquito due to the hypnozoites. In the liver resting stage of the schizomes is called hypnozoites. Some of the shy zones go the developmental stage and develop into the gametocytes, male and female gametocytes. And when Anopheles mosquito bites to the human, they inject the sporozoites in the humans and also taken up the blood meal which contain the male and female macrogametes. It is a schizogony or asexual life cycle in human completed, and the infected blood taken by Anopheles female mosquito, and in their gut there's zygote formation, single macrogamete which is female gamete, and eight
जो flagellate are microgametes which are male gametes. Their union occurs in zygote formation. Zygote convert into the ookinetes, which converts into the oocyst, which contain the sporozoites. These are the sporozoites, and a rupture of the oocyst release sporozoites, which are taken up by the salivary, resting in the salivary glands of the female Anopheles mosquito. And after the next bite to the human, these are transmitted to the human, and cycle is repeated. Period of pre-erythrocytic cycle. PYX 8 days, falciparum 6 days, malaria 13 to malaria 13 to 16 days, POL 9 days. On maturation in the liver cell rupture liberates merozoites into the bloodstream. Affinity of parasites for erythrocytes means the different types of the plasmodium attack which age group of the RBC. So plasmodium vivax, plasmodium malariae, and plasmodium ovale infects only young or mature erythrocytes, but the PL falciparum infects all age group. Also adhere to the endothelial lining of the blood vessel, causes the obstruction, thrombosis, and local ischemia. Why a P. falciparum infection called the malignant Russian malaria? Erythrocytic cytoplasm. Liberate merozoites when the liberated merozoites from the liver cells penetrate the RBC. Three stages occur in the RBC. Trophocytic stage, schizont stage, and again merozoite stage. So, merozoites released from the liver cell, taken up by the RBC. In the RBC, it becomes schizont, and it releases and developmental stage trophozoite, which is also called ring stage, and this is for the falciparum, 2 dots, and for the PYX, 1 dot. Because in Pakistan and other in our country, only PYX and P falciparum are common. Malaria and ovale are very rare. Erythrocytic cycle. After the rupture, red cells released merozoites which attack new red cells and continue with the schizophrenia, means new RBCs are affected and new schizones are formed. Others are a repeated cycle will continue. The falciparum infected erythrocyte with the schizones aggregates in the capillaries of the brain, the kidneys, and causes the complication. Only ring forms are seen in the blood smear of the P. falciparum, but the schizone forms are also seen in case of PYX. These are the developmental stages in the RBC. This is a ring stage. Trophozoite are rings. Trophozoite. After invasion, grow and feed to develop ring stage. In case of P. vivax, single ring seen inside the RBC, but in case of P. falciparum, with 1 dot or with 2 dots, the rings 2 to 3 inside the liver cell also attach with the surface of the RBC. So blue cytoplasm and red nucleus. This is nucleus and signet ring appearance, means at periphery it is attached and it is a ring stage or trophozoite stage. So blue cytoplasm and red nucleus called the signet ring appearance. Okay. Schizone. When the trophozoites are fully developed, becomes compact,
Malaria pigments are scattered through the cytoplasm. The nucleus is large and lies at the periphery. Start dividing, becomes shy zones. Shy zones में हमें डॉट्स नजर आएंगे पूरे shy zones में due to the जो है breakdown of the nucleus. For PYX, these are developmental stages. Ring form, mature trophozoite. Uh, these are trophozoites and converts into the early shy zones, mature shy zones. ठीक है. डायग्नोस्टिक स्टेज शायद जोन्स हमें ब्लड सिमियर में जब हम एमपी देखते हैं मलेरिया पैरासाइट तो हमें या तो शायद जोन्स प्लाज्मोडियम वायरस के इस तरह नजर आएंगे या इस तरह हमें रिंग नजर आएगी. ठीक है, या ये ट्रोफोजोइड्स इस तरह हमें रिंग नजर आएगी और ये डायग्नोस्टिक स्टेजेस हैं फॉर दी पीवाईएक्स. इसके अलावा हमें गेमेटोसाइट्स भी नजर आ सकते हैं. पीफेल्सिपेरम उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है. एक रिंग भी हमें नजर आ सकती है या एक से ज्यादा रिंग्स विथ वन डॉट. इट इज अ न्यूक्लियस और टू न्यूक्लियस डॉट्स. इस तरह डबल जो डॉट्स हमें रिंग्स पीफेल्सिपेरम के केस में नजर आ सकते हैं या एक से ज्यादा रिंग्स इनसाइड द सेल या फिर पेरिफेरी पे अटैच भी हमें मिल सकती है. ये देखिए सिंगल जो न्यूक्लियस है दो डॉट्स के साथ भी है. फिर इट कन्वर्ट्स इनटू दी शाई जोन्स. पीफेल्सिपेरम के शाई जोन्स हमें बहुत कम नजर आते हैं जो पेरिफेरल ब्लड पे, बट हमें गेमेटोसाइट्स पीफेल्सिपेरम के बनाना शेप या क्रिसेंट्रिक शेप इस तरह हमें ब्लड सिमियर पे नजर आ सकते हैं. ये सारी डायग्नोस्टिक है. ये रिंग्स हमें नजर आ रही हैं पेरिफेरल ब्लड सिमियर में. एक से ज्यादा भी है, एक भी है. ठीक है, दो डॉट वाली भी हैं, सिंगल डॉट वाली भी हैं. ठीक है, सिंगल डॉट वाली भी हैं. ठीक है, और हमें गेमेट्स भी नजर आ सकते हैं लेकिन शायद जोन्स भी पेरिफेरम में हमें नजर नहीं आएंगे. ओवेल बहुत अनकॉमन है पाकिस्तान में. इसकी भी रिंग्स इस तरह हमें नजर आएंगी, शायद जोन्स वगैरह नजर आएंगे. ठीक है, ये है शफनर्स डॉट्स और जेम्स डॉट इसकी जो है न्यूक्लियस के अंदर ये सॉरी साइटोप्लाज्म में और ये हमें न्यूक्लियस नजर आएगा. ये शफनर्स जो है या जेम्स डॉट्स डायग्नोस्टिक के. पी मलेरिया ये भी वेरी अनकॉमन है. इसके रिंग्स इस तरह हमें नजर आएंगी. ठीक है ना, दो पेरीफेरी पे इस तरह अलग अलग भी नजर आ सकती हैं शायद जोन्स इसके. ठीक है, इसकी जो ब्लड सिमियर में हमें प्लाज्मोडियम मलेरिया की इस तरह की नजर आई. ये रिंग्स हैं या इस तरह के शायद जोन्स हमें नजर आ सकते. Exoerythrocytic chalcogony. Some sporozoites do not undergo ये स्पोरोगोनी नहीं है, शाइजोगोनी है. अंडरगो शाइजोगोनी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट गो इनटू द रेस्टिंग स्टेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉल्ड हिप्नोजोइड्स इन द लिवर. रिमेन देयर फॉर इयर्स 1 to 2 years. ठीक है, रिएक्टिव टू फॉर्म शाइजोन्स. बीच में भी किसी भी टाइम ये रिएक्टिव होते हैं. जब इम्यूनिटी डिक्रीज हो तो ये डेवलप होंगे शाइजोन्स में. फिर वही स्टेजेस मीरोजोइड्स रिलीज होंगे शाइजोन्स और फिर सारी मलेरियल पैरासाइट की साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे. दिस टाइप ऑफ द हिप्नोजोइड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ पीफेल्सिपेरम. दीज आर सीन इन द केस ऑफ ओवेल एंड वाइवेक्स वगैरह में हम नजर आ सकते हैं लेकिन फेल्सिपेरम में हमें नजर नहीं आएंगे. वाइवेक्स में जो कॉमन है हिप्नोजोइड्स रेस्टिंग स्टेज. गेमेटोगोनी. मीरोजोइड डिफरेंशिएट इनटू द मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शाइजोन्स रप्चर होंगे, मीरोजोइड्स रिलीज होंगे, उसमें कुछ दोबारा नए आरबीसीज को रीइन्फेक्ट करके शाइजोन बनाएंगे. कुछ हिप्नोजोइड्स रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे और कुछ गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे. और जब बाइट ऑफ मलेरिया
सॉरी मॉस्किटो होगी तो मॉस्किटो के ब्लड जो ब्लड सक करेगा उसके साथ उसके जीआईटी में जाएंगे। Merozoite differentiate into the male and female gametocyte. Macrogametes, also called the female gametocyte. Microgametocytes are also called male gametocytes. These develop in the RBC. RBC में ये बन जाते हैं, लेकिन उनकी फर्दर डेवलपमेंट जो है मॉस्किटो में होती है, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ साइकिल या स्पोरोगोनी मॉस्किटो में होती है। Found in the peripheral blood smear, ठीक है। Macrogametes of the all species are similar in size, but the macrogametes are larger in size. ये है मैक्रोगेमेट्स हैं, फीमेल जो गेमेट्स हैं ये माइक्रोगेमेट्स हैं। ये फेल्सीपेरम के क्रिसेंट या बनाना से बाकी स्पीशीज के सराउंड में नहीं। ये मॉस्किटो में है, मॉस्किटो ने लिया oocyst उसके गट में बना स्पोरोजोइड्स एंड द salivary gland, and when the mosquito bites they release the sporozoids in the blood of the human. Mosquito cycle. Sexual cycle starts in the mosquito gut. Sexual cycle will be initiated in the humans because जैसे मैंने अभी आपको बताया gametocytes are found in the humans. So they develop further in the female Anopheles mosquito. Only mature sexual forms are capable of further development in the mosquito. In the midgut of the mosquito, one microgametes developed into 4 to 8 thread-like filamentous structure named microgamete. एक में से 4 या 8 माइक्रोगेमेट्स बनेंगे, जबकि मेल और फीमेल जो मैक्रोगेमेट है वो एक ही होगा और उनकी फर्टिलाइजेशन अक्कर होगी और जाइगोट फॉर्मेशन। So fertilization occurs when microgametes gametocytes penetrate into the macro. One जो है one macrogamete में ही जाएगा, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Fertilized macrogametocytes is known as zygote. Zygote matures into the ookinete. Ookinete convert into the oocyst. These are the developmental stages जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Oocysts mature with the large number of sporozoids, a few hundred to thousand in one जो oocyst में sporozoids होंगे। oocyst जो है rupture होगा, फिर sporozoids release in the body cavity of the mosquito. There is a specific predilection for the salivary gland. So वो salivary gland में जाएंगे और वहाँ पे जाके रहेंगे. Now capable to transmit the infection to the again to the human with the bite of female Anopheles mosquito. Pathology and pathogenesis. Sporozoids release result from the जो है sexual and sporogenic cycle, which is sexual life cycle, developed in the mosquito and injected into the human blood through serum. So even star bite of the infected Anopheles mosquito, sporozoids enter the liver in within a 1 hour and infect the parenchymal cell. Numerous asexual progony. तो मीरोजोइड्स जब लिवर सेल रप्चर होंगे तो उसमें से मीरोजोइड्स रिलीज होंगे और एंटर टू द ब्लड सेल्स आरबीसीज में जाएंगे। एरिथ्रोजेनिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी, मल्टीप्लाई इन स्पेसिफिक फैशन। Broods of the merozoites appear at 48 hours interval in case of whale vivax falciparum, but in case of the malaria appears in 72 hours. Why it is called quatron malaria, and all these three are Trojan malaria. Merozoites release invade red blood cells. P. vivax infect the young erythrocyte. P. malariae infect old erythrocyte. P. falciparum infect RBCs of all ages. The merozoites are appear shaped 1 to 5 micron in length. The receptors for the merozoites are on red cells in the glycoprotein.
specific for the each species. They feed on red blood cells and engulf the endocytos. Enters the RBC becomes trophozoites. ठीक है, पहले जो एक स्पोरोजोइट्स जो मीरोजोइट्स इन्वेट करेंगे आरबीसी को, वो कन्वर्ट होंगे ट्रोफोजोइट, रिंग फॉर्म ट्रोफोजोइट्स, देन मीरोजोइट, एंड अगेन आरबीसी रप्चर, मीरोजोइट्स रिलीज्ड. Size of trophozoite is one third of RBC, except in P. falciparum, which is one fifth of the RBC. Feed on hemoglobin but do not totally metabolize and form the malarial pigment. जो हमें नजर आ रहा था. Schizomes are 9 to 10 micrometer divided and produce 8 to 32 merozoites arranged in rosettes in 2 rows. Mature schizomes rupture and release merozoites, causes the paroxysms of the fever, and merozoites invade fresh RBC and cycle is repeated. Cycle repeats every 48 hours in case of falciparum or well vivax, and if these are infection with these are called tertian malaria. Repeat every 72 hours in the malaria, so called quaternary malaria. Incubation period varies according to the species, which includes the exoerythrocytic cycle time in the liver and 1 or 2 erythrocytic cycles. P. vivax and P. falciparum 10 to 15 days can vary from weeks to months. P. malaria infection can start after 28 days. And P. in case of P. falciparum may little time require. Clinical features. Fever and shivering. आपने देखा होगा मलेरिया स्टार्ट विद फीवर, हाई ग्रेड फीवर विथ severe shivering. The attacks begin with the fever, with the temperature rising as high as 40 or 41 degrees centigrade again over a period of several hours. A poor general condition, feeling unwell, having headache, like influenza, diarrhea, nausea, vomiting occur, may abdominal cramp may occur. Clinically, the symptoms often associated with the malaria are due to the bursting of the RBC. जब भी RBC rupture होंगे, release of merozoites and attacks जो bouts होते हैं मलेरिया के, shivering, fever वो start होंगे. And clogged capillaries of the major organ. Infection occur when the infected Anopheles mosquito feeds on the individual, releasing sporozoites into the bloodstream. Mosquito can carry more than one species. एक मॉस्किटो में एक से ज्यादा स्पीशीज यानी कि वाइवेक्स फेल्सिपेरम दोनों भी हो सकती हैं. ठीक है ना, तो डबल इन्फेक्शन होगी दोनों प्लाज्मोडियम जैसा. ये होंगे फीवर, स्वेटिंग, एनीमिया, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली भी हो सकती है, इरिटेबिलिटी होगी, कोमा, रेटिनल हेमरेजेस हो सकती हैं, अल्जिक मलेरिया और शॉक लाइक सिंड्रोम हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है. Cerebral malaria. Malignant malaria can affect the brain and the rest of the central nervous system. So it is characterized by changes in the level of consciousness, convulsions भी हो सकते हैं, coma or death, paralysis, death may occur. It is called cerebral malaria and it is caused by P. falciparum. Present with the hyperpyrexia can lead to the coma, paralysis, and other complications. Brain appear congested. Black water fever. It is one of the another complication with the P. falciparum. In malignant malaria, a large number of the red blood cell corpuscles are destroyed. Hemoglobin from blood corpuscles is excreted in the urine, and the color of the urine turns to the dark brown or blackish color, cola color. So it is called black water fever. Renal failure may occur.
How long malaria infection can last? Man, without treatment. Without treatment, P-falciparum will terminate in less than 1 year. But in case of PYY, so when persistence echinozoids after the persister have disappeared from blood, so for years हो सकता है. So can produce periodic relapses up to the 5 years. In Plasmodium malaria may last for the 40 years. So God, there is a recrudescence or relapse malaria. Parasites survive in erythrocytes and liver. It is फिलहाल उसका कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. उसमें कितने अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लिवर में फॉर इयर्स. वाई फेल्सिफेरम इन्फेक्शन आर डेंजरस, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सेरेब्रल मलेरिया, मलेरियल हाइपरेक्सीमिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है डिसऑर्डर्स, अल्चिड मलेरिया, शॉक लाइक सिंड्रोम, ब्लैक वाइटर फीवर और रीनल फेलियर एंड डेथ कैन अकर ड्यू टू ऑल दिस. Complications of malaria can produce nephrotic syndrome in case of especially P. falciparum affect mainly children of younger age group. Pernicious malaria carries a high mortality. On few occasions, life-threatening complication can occur in the infection with P. falciparum associated with the heavy parasitization, grouped into three types: cerebral malaria, alchid malaria, black water fever. इन सबको मिला के हम pernicious. How malaria present clinically? Stage 1. Chills for 15 minutes to 1 hour caused due to the rupture of the RBC from the host red cell, escape into the merozoites release in the blood. ठीक है. Present with nausea, vomiting, headache भी हो सकता है. Stage 2 fever may reach to the 40 or may 41 degree centigrade, last for the several hours. Start having a newer red cell. पेशेंट स्टार्ट स्वेटिंग, उसके बाद स्वेटिंग स्टार्ट होगी. कंक्लूड्स द एपिसोड. सो साइकिल आर फ्रीक्वेंटली एसिंक्रोनस. पैरोक्सिस्मस जो है इसके इस तरह के टेक्स 48 to 72 आवर्स में होंगे. मलेरिया में 72 आवर्स, बाकी केसेस में 48 आवर्स में रिपीट होगी. सिस्टमिक मैन्युफैक्चरिंग इसकी हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होगी और नार्मोसिटिक जो है हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप हो सकती है और रिपीटेड रप्चर्स ऑफ आरबीसी, स्पेशली सीवियर एनीमिया होगी इन केस ऑफ पी falciparum. हाउ टू डायग्नोस अ केस ऑफ मलेरिया? Lab diagnosis of the malaria can be made through the microscopic examination of thick and thin smear. ठीक है ना, थिक एक ड्रॉप हम ब्लड का डालेंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे, ये थिक स्मेयर बन जाएगा. थिन स्मेयर हम एक ड्रॉप रख के उसको स्प्रेड कर देंगे पूरी स्लाइड पे. थिक स्मेयर जो है more sensitive in detecting malarial parasite because the blood is more concentrated, allowing for the greater volume of the blood to be examined. However, thick smear are more difficult क्योंकि वो थिक होती है, इतनी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है. इसमें एक्सपर्ट जो है देखने वाले हों तो डायग्नोस कर सकते हैं. इस तरह हम कौन से फिंगर हैं, इन दोनों फिंगर में से किसी को क्लीन करके उसको पंक्चर करेंगे. ठीक है, और स्लाइड पे ड्रॉप डालेंगे 2 स्लाइड पे और इस तरह हम स्लाइड बनाएंगे. ये थिक से एक ड्रॉप हमने डाल दिया थिक के लिए और फिर दूसरी स्लाइड से इसको प्रेस करके एक सर्कुलर फैशन में या वैसे भी स्लाइड से घुमा के सर्कुलर फैशन में थिक स्मेयर बना देंगे. ये थिक स्मेयर है और ये थिन स्प्रेड कर दिया है हमने एक ड्रॉप रख के, दूसरी स्लाइड को इंक्लाइन रख के उससे पूरी को स्प्रेड कर दिया. माइक्रोस्कोपी कैन बी आइडेंटिफाई द एग्जामिनर. हमने जब थिक और थिन स्मेयर बना दी उसको जेमसा स्टेन करके और हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है
एमपी या मलेरियल पैरासाइट को देखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहा जाता है। जेम्सा स्ट्रेन में हमें इस तरह की पिक्चर्स नज़र आ सकती हैं, इस तरह की रिंग्स हमें नज़र आ सकती हैं। ये वाइवेक्स और वेल मलेरी के केस में, ये फेल्सीफेरन के केस में इस तरह हमें एक से ज़्यादा रिंग और 2 डार्ट के साथ भी नज़र आ सकती हैं। इस तरह रिंग या ये हमें जो है शाइजोन्स, वाइवेक्स और दूसरी कंडीशन गेमेटोसाइट्स भी हमें नज़र आ सकते हैं। ठीक है। क्यूबीसी सिस्टम, क्वांटिटेटिव बफर जो है वो इसमें हम देखते हैं इन्वॉल्व इज, ठीक है। क्यूबीसी मलेरियल जो मेथड है, इसमें हम एक स्पेशल क्यूबीसी पिपेट होती है, उसमें हम ब्लड लेते हैं, जो एक्रीडाइन इसमें स्टेंड है वो ऑलरेडी उससे स्टेंड होती है वो ट्यूब, और उसमें हम ब्लड लेके उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सो क्वांटिटेटिव बफर जो है उसमें कोट हमें नज़र आता है, या ठीक है, और उसमें हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो 3 जोन्स बनेंगे। एक प्लाज्मा जोन बनेगा, नीचे बॉटम में जो आरबीसी सेटल हो जाएंगे, और बीच में एक बफर जोन बनेगा जिसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो जो आरबीसी वाला बॉटम वाला होगा उसके टॉप पे, यानी कि बफर जो जोन होगा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, इनके बीच में जो टॉप पे ब्लड होगा, उसमें बहुत सारे अगर मलेरिया इन्फेक्टेड ब्लड है तो वो जमा हो जाएंगे और स्टेन भी होंगे एक्रीडाइन जो डाई है उसके साथ ऑरेंज कलर में, और फिर हम इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये इस तरह के जोन बनेंगे, ये जो है ग्रेन्युलोसाइट और जो प्लेटलेट का ये बफर कोट है वो बनेगा, और ये आरबीसी, इस पोर्शन, इस बफर कोट और आरबीसी वाले में टॉप पे जो इसमें मलेरियल पैरासाइट हमें ज़्यादा मिलेगा। ये जो है हमें फ्लोरेसेंट जो माइक्रोस्कोप में इस तरह हमें ऑरेंज कलर का मलेरियल पैरासाइट या रिंग फॉर्म में हमें नजर आए। ये जेम्सा से भी ज़्यादा सेंसिटिव है और इसके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा वेरियस टेस्ट किट्स जैसे क्रोमेटोग्राफिक जो किट्स रहते हैं, आपने सुना होगा आईसीटी मलेरिया, इट इज़ इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, आईसीटी, आईसीटी मलेरिया, उसके ज़रिए भी हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, दीज आर रैपिड डायग्नोस्टिक आरटीटीज। ठीक है, एमपी के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्यूबीसी के ज़रिए भी कर सकते हैं, और फिर या हम पीसीआर के ज़रिए भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजी डिटेक्ट्स दी, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट की सीरोलॉजी की एंटीबॉडीज हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट और इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्पेंटेसिस यानी कि एलाइजा के ज़रिए भी कर सकते हैं, और इसके अलावा पीसीआर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एमपी या दूसरे जरियों से हो जाती है, तो हम इस टेस्ट पे बहुत रेयरली जाते हैं। कोई लाइफ रेटेड जान डायग्नोस डिफिकल्टी हो डायग्नोसिस में, तो फिर हम पीसीआर पे जाते हैं। अदर नॉर्मोसिटी ब्लड सीबीसी में नॉर्मोसिटिक एनीमिया हमें नजर आएगी, लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़ी सी एबनॉर्मल हो सकती हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कास इन द यूरिन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा रीनल डैमेज होगा, फेल्सीपेरम में तो ब्लैक वाटर फीवर, ओलिगूरिया, ये सारी होगी। उसमें यूरिन में खास प्रोटीन, रेड सेल, बिलीरुब ये सॉरी हेमोग्लोबिन नजर आएगी। ट्रीटमेंट, still the chloroquine continued to be the drug of choice in forms of such
टू ऑल फॉर्म के, लेकिन कुछ केसेस जो फेल्सिपेरम के हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर जाते हैं क्लोरोक्विन से, ठीक है। सो 1.5 ग्राम ऑफ क्लोरोक्विन बेस ओवर 3 days पीरियड इन एडल्ट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 टेबलेट में तो 4 स्टार्ट में देंगे, 2 6 आवर के बाद, फिर 1 BD फॉर 2 days कर देंगे, ठीक है, या 1 BD फॉर 3 days भी हम दे सकते हैं, 3 to 4 days में, ठीक है। और चिल्ड्रेन में अकॉर्डिंग टू वेट डोज कैलकुलेट किया जाता है। इन केस ऑफ फेल्सिपेरम कोमा नीड टू ट्रीट विद द क्विनिडीन ग्लूकोन, ठीक है। क्विनिन हम ड्रिप में डाल के उसको दे सकते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है फेल्सिपेरम इन्फेक्शन है तो उसमें हम क्विनिन वगैरह को ड्रिप में दे सकते हैं, या कॉन्शियस है तो ओरल ट्रीटमेंट। जब रेजिस्टेंस वगैरह हो तो फिर हम दूसरी ड्रग्स पे जाते हैं, ठीक है ना। प्राइमाक्विन कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया, रेस्टिंग स्टेज यानी कि हिप्नोजॉइड्स लिवर में रहते हैं, तो उसमें एक ड्रग आती है प्राइमाक्विन, ठीक है। और इसके अलावा 8 अमाइनो क्विलोन जो एलिमिनेट करते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म या लेसिव फॉर्म या हिप्नोजॉइड्स को। लेकिन इसकी में हम कॉन्शियस रहते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज जो है उसकी डेफिशिएंसी हो, या तो फिर उसमें हम नहीं देते हैं, उसमें सीवियर हेमोलाइसिस हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है अगर हम प्राइमाक्विन उसमें यूजुअल डोज में दें। अगर लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं तो उसमें हम लो डोजेस में और विद कॉन्शियस होके इसको दे सकते हैं। ये खासतौर पे इलाके हैं जहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो डफी ग्रुप है उसमें पीवाईवेक्स की, डफी ग्रुप एंटीजन है उसमें पीवाईवेक्स नहीं होता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया जो है उनमें पीफेल्सिपेरम, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी नहीं होती है कि पैरासाइट डेवलप हो, तो ऐसे सेल्स में तो उनमें भी वो उनमें रेयर है बहुत, ठीक है। और जो है जो डफी ग्रुप है उसमें पीवाईवेक्स नहीं होता, उनकी एंटीजन नहीं। अच्छा, ट्रीटमेंट ड्रग रेस शुड बी ट्रीटेड क्विनिन सल्फेट, जैसे मैंने आपका सिंगल डोज कॉम्बिनेशन और ड्रग पैरामिथामिन एंड सल्फाडॉक्सिन फेंसिडार भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्विनिन ड्रिप में हम दे सकते हैं। अदर अल्टरनेटिव्स आर क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, क्विनिन प्लस क्लिंडोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं तो उनमें हम दे सकते हैं, या मेफ्लोक्विन दे सकते हैं, हेलोफेरिनॉल ये भी अब बंद हो चुकी है। आर्टीमेथर आजकल यूज में खासतौर पे पीफेल्सिपेरम इन्फेक्शन में आर्टीमेथर अलोन भी, या आर्टीमेथर इन कॉम्बिनेशन विद ल्यूमिफेंट्राइन, जेनेम वगैरह के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। प्रोफाइलिक्स में हम क्लोरोक्विन दे सकते हैं, मेफ्लोक्विन से दे सकते हैं, ठीक है। जिन एरियाज में मलेरिया कॉमन है, ठीक है ना, उनमें जाते हुए फिर उनको प्रोफाइलेटिक ड्रग्स जो है, ठीक है ना, वो हम दे सकते हैं, क्विनिन या मेफ्लोक्विन वगैरह। अच्छा, जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका होता है मलेरिया का, उनमें जो फेल्सिपेरम कॉम्प्लिकेशन तो लेस सीवियर में, जिनको फर्स्ट टाइम ऐसे इलाके जहाँ मलेरिया नहीं होती है वहाँ से कोई ट्रेवल करे इस इन इलाकों में, उनको फर्स्ट टाइम मलेरिया हो फेल्सिपेरम वगैरह, तो डेंजरस अटैक्स हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी, one of the most important and devastating infection disease in developing countries worldwide. 40% of the population lives in areas where malaria transmission occurs. Parts of Africa, whole Asia, the Middle East, Central and South America, uh, Hispaniola और ओशिनिया, ये इलाके हैं जहाँ पे ये 40% पॉपुलेशन में है ये कॉमन।
एपिडेमिक्स। अच्छा, इसमें है मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी। 300 to 500 मिलियंस में ज़्यादातर जो है मलेरिया जो कॉम्प्लिकेशन है वो फेल्सिपेरेंट के हैं। सेरिब्रल मलेरिया है, एल्चर मलेरिया है, जो ब्लैक वाटर फीवर, रिनल फेलियर की वजह से। कंट्रोल किस तरह करेंगे? एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल करें, ठीक है, और जो है इम्प्रूवमेंट्स इन दी हेल्थ हाइजेनिक कंडीशन, मॉस्किटो को किल करें, उनकी अफजाइश को रोकें, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा फुल स्लीव्स क्लोथिंग वगैरह, खासतौर पर मलेरिया सीजन में लॉन्ग ट्राउजर्स, यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स। वैक्सीन कुछ इस पे काम हो रहा है। द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव, माइट टू बी टेक्निकली फीबल विद द करंट वैक्सीनोलॉजी आर्ट ऑफ द साइंस। So many जो है वैक्सीन डेवलपर्स have therefore focused on their efforts on creating a vaccine that limits the ability of the parasite successfully। but इसमें है कि पैरासाइट को फुल्ली तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन वैक्सीन में की वजह से, लेकिन ये है कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस या उसकी जो है अटैक या उसकी जो साइन सिम्टम्स वो कुछ लो इंटेंसिटी पे हो, ठीक है। ये कुछ ट्रायल्स हुए हैं वैक्सीन के, उसमें जो हम 3 डोजेस देते हैं। इसमें जो इंटरवल है, फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ जो फर्स्ट और सेकंड डोज में उसमें हमें 46, फिर सेकंड में 85, और फिर लास्ट डोज जो 6 वीक्स पे उसमें जो है हमें 0% भी मिल सकता है। वर्ल्ड मलेरिया डे, प्रीवियसली अफ्रीका मलेरिया डे अफ्रीका में होता था, उसको जो ये कंबाइन एवरी ईयर 25 अप्रैल है, 2008 से स्टार्ट हुआ है, और हम हर साल ये वर्ल्ड लेवल पे मलेरिया डे मनाया जाता है। थैंक यू। सलीम फीडबैक पर सलीम फीडबैक।